a lecture on present continuous tense. You are going to learn the present continuous tense. Now I am going to read about the definition. Any action or work which is going on right now. Okay? कोई भी काम जो जारी है, जो अभी हो रहा है, जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो ऐसा कोई भी काम होगा ना जिसमें कंटिन्यूटी होगी, जो चल रहा होगा, एक तसलसल होगा, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस टेंस. चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का होगा, वो कंटिन्यूस. जस्ट इन द एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ बुक. तुम किताब पढ़ रहे हो. Now we are moving towards our next point, that how we will learn about present continuous tense in Urdu. How we will translate an Urdu present continuous tense into English present continuous tense. इन जुमलों में काम का जारी रहना पाया जाता है, मतलब एक तसलसल होता है, एक कंटिन्यूटी होती है. जैसे कि ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कि जारी रहना, ठीक है. और इनकी अगर हम पहचान देखें तो इनके आखिर में अक्सर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह ये अल्फाज आते हैं. अब एक कंटिन्यूटी होगी, ठीक है. और अब हम लर्न करेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे हम पहचानेंगे जुमलों को और कैसे हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. वो गुड़िया से खेल रही है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो वो की होगी शी, गुड़िया की हो जाएगी डॉल, खेल की होगी प्ले, रही है आ गया तो हम ing ऐड कर देंगे, ठीक है. और हेल्पिंग वर्ब शी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ एज आएगा, तो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस बनेगा शी इज प्लेइंग विद डॉल. Focus. I am telling you the most important point. We have two names for present continuous tense. Present continuous, number 1. Number 2, present progressive tense. Some people call it progressive or other call it continuous. It's like a nickname of a person. Just like your mother calls you with a nickname. And when you come outside, people call you with real names. So it's mean you have two names. So don't need to worry. It's easy. Till now, we have understood names, definitions, and English, Urdu, what, recognition, and Urdu. Now, we are going to understand how to make the example sentences. To do that, we need to see the structure of making examples. So, let's see the structure. First of all, there is always subject. Then comes helping verb, and there are three helping verb in continuous as am, are in present continuous tense. Then the verb comes with ing and then is the object. As in the example, they are taking dinner. Helping verb is am, are. They subject, taking verb, dinner object, and are, as you know, is a helping verb. So it's too easy. Let's learn. Let's learn about the helping verbs that we use in the present continuous tense. We use three helping verbs as, am, are. Let's first discuss about as. We use as with singular words. For example, he, she, it. Third person, we use as with third person and with any singular name. Although I and you are singular, but we don't use as with I and you. Remember, with I we use am. Okay, am is also a helping verb we use only with I. Example, I am going to school. Are is also a helping verb. We use are with plural words, they, we, any, and with you. Now we are learning about form of verbs. Keep in mind that every tense has its own form of verb. Okay, every tense has its own form of verb. Let's say if you are using past indefinite tense, you will use second form of verb, while in present indefinite you use first form of verb. Please don't be confused. You just need to know which tense use which verb
form, then just use it. Just like verb first form eat in present indefinite tense, verb second form ate in past indefinite tense. Similarly, verb third form eaten is used in the perfect tenses, and verb fourth form with ing, just like eating, we use it in the continuous tenses. Remember one trick: either it is present continuous, past continuous, future continuous. You have to use eating in every tense, means fourth form of verb in every tense. According to the structure, we have to use verb fourth form, so the eat will be eating. As in the present indefinite tense, we have the 5 different types of the sentences. Similar as with the present continuous tense, we have also here the 5 different types of the sentences. We have 5 types of sentences. Okay. Number 1, simple or affirmative. They are totally simple. Nothing is asked, nothing is denied. Number 2 is the negative sentences, in which we deny for something. Number 3 is the interrogative sentences, in which we are asking a question. And number 4 is the interrogative. Interrogative means they have both negativity and interrogativity. Question is asked and denied too. Number 5 is the WH questions. WH questions are those in which WH family is involved. Number 1, affirmative sentences. Affirmative sentences are totally the simple sentences. Okay, मतलब ऐसे जुमले जो बिल्कुल सिंपल हो, कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, उसमें किसी चीज़ से मना ना किया गया हो. ओके, और इनका अब हम फॉर्मूला देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे ना, वो होगी फोर्थ. मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर ing लगा दे तो वो बन जाएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब में डिस्कस किया था. और जो लास्ट वन होगा वो होगा ऑब्जेक्ट. लेट्स सी इन द एग्जाम्पल. Number 1, they are taking dinner. Okay. Number 2, she is completing her work. Number 2, negative sentences. We use negative when we want to deny or when we are not agreeing with someone. मतलब ऐसे जुमले जिसमें हम मना कर रहे हैं या किसी की बात से हम मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें 2 चीज़ों का एडिशन हो रहा है. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा. हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे नॉट. ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट के बाद आएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जस्ट लाइक दे आर नॉट टेकिंग डिनर. ठीक है, आर नॉट आ गया है तो मीन्स ये नेगेटिव हो गया, मना कर रहे हैं किसी चीज़ से. So it's negative sentence. Number 3, interrogative sentences. As we are learning present continuous tense, so I will discuss the interrogative sentences according to present continuous tense. As you know, interrogative mean questioning, सवालिया जुमले जिसमें हम कुछ पूछ रहे हैं. अब इन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा. सिंपल में सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उसमें एक चेंज आ जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब था वो उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और एंड पे हम लोग यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन मार्क. SMR प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि इज़ ही अटेंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. क्या वो अंग्रेज़ी की जमात ले रहा है? तो अब इज़ ही आ गया ना, तो इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ही से पहले आ गया, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव. अब सेकेंड हम देखते हैं, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ? नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव sentences. Double interrogative sentences are those in which we are using WH family. Why, when, who, whom. Okay? मतलब ऐसे जुमले जिसमें क्यों का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ जा रहे हो इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे. जैसे what, when.
व्हाट व्हेन हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब से पहले, WH फैमिली लगाएंगे हम पहले, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके साथ ING वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, वाई इज अली गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल क्यों जा रहा है। ठीक है, क्यों का इस्तेमाल हो गया ना, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। वाई आर यू कमिंग लेट, तुम देर से क्यों आ रहे हो। Interrogative sentences. As we are discussing about the present continuous tense, so now I will tell you about interrogative negative sentences according to the present continuous tense. अब इंटेरो भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस कैसे कंबाइन करेंगे, तो इसमें हम क्वेश्चन भी पूछेंगे लेकिन हम मना भी करेंगे उस चीज़ से। तो बेसिकली हम ऐसे कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट इंटेरोगेटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो तो हमने पहले लाना ही लाना है। इंट्रोगेटिव जो है उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब तो उठ के स्टार्ट में आ गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे नॉट, SMR आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आर वी नॉट वेटिंग फॉर यू, क्या हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। सवाल भी पूछ लिया और मना भी कर दिया, तो ये इंटेरोगेटिव हुए। आर यू नॉट सीइंग मी,